So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss the 3 Nobel Prize that were announced last week, and that is Nobel Prize in Chemistry, Literature and Peace. So we have already done the earlier two, that is Nobel Prize in Medicine, we have already done. Then Nobel Prize in Physics we have done, right? So let us begin with this, and tomorrow we'll do Nobel Prize in Economics. Okay. So just hold on. Yes. Oh, sorry. Just hold on. Oh, no, something happened. एक मिनट वेट कीजिएगा. Just. I hope the slide is visible because I don't know what happened. It was getting stuck. Okay, so let us begin without wasting our time. So let's first discuss about Nobel Prize in Chemistry, right? So first of all, please tell me Nobel Prize in Chemistry is given by which country? Okay, so I hope that you all should be answering it because these are very easy questions. I have told you that except Nobel Peace Prize, the other 5 are actually given by Sweden. So B is the right answer to this question. Yes, very good. Many people are answering it. Here is Sweden. We have done it. Stockholm is its capital. Yes, हम लोगों ने कर लिया. So that's why I'm not discussing it, repeating it. Name the institute which gives Nobel Prize in Chemistry. So in today's class, we will discuss some of the past Nobel Prizes as well. Because if you see the PYQs of CLAT, they are asking questions of past Nobel Prizes. My network is glitching? I think it's fine, right? So Nobel Prize in Chemistry, Royal Swedish Academy of Sciences, it gives physics, chemistry, and literature. So B is the right answer to this question, right? So Royal Swedish Academy of Sciences gives Nobel Prize in physics, chemistry, and economic sciences, right? Okay. Let's move on to the next one. Yes, you can read about it, Royal Swedish Academy of Sciences. And now we are not going in that detail. Thoda sa pad lijiyega, founded in 1739, etc. And all. And yes, it is about it. And I had got it in Stockholm. And this is the President and Secretary General. They announce the award ceremony, etc. So, and tomorrow we will discuss about Nobel Prize in Economics or Severege's X Bank Prize tomorrow because they'll be announcing it for today. हाँ yes, मैंने यहाँ पे लिटरेचर बोल दिया था क्या गलती से? Okay, please correct it. Nobel Prize in Physics, Chemistry and Economics. ठीक है. Royal Swedish Academy of Sciences gives Nobel Prize in Physics, Chemistry and Economics. Swedish Academy ये वाला जो है ना, this is actually what we call Nobel Prize in Literature they give. ठीक है. So please correct it. Thanks for correcting me, Kushagra. Okay. Yes, ceremonies happen on 10 December, right? So let's talk about this year Nobel Prize in Chemistry 2025. Yes. So the winner of the Nobel Prize in Chemistry 2025 are what? Who are the people? Please tell me. बताइए. Yes, Karolinska Institute Physiology में देती है. Riva. We have done it. So the right answer here is actually people answering option B. Sure, the right answer option A, not B. Suzumu Kitagawa, Richard Robson, and Omar M. Yagi. This is the answer. I could not get the right answer. The right answer is A. Nandini, yes, you are right. Please be aware. This is the answer. Option A. I could not find a correct answer. Only Nandini has answered me. Okay. So you have to be very careful. Okay. Nobel Prize in Chemistry winner 2025. So Suzuma Kitagawa, Richard Robson, and Omar M. Yagi won Nobel Prize in Chemistry for what? किस कारण 2025 नोबेल प्राइज केमिस्ट्री मिला? Nobel Prizes are very important, so please you have to be very serious.
for the development of metal organic framework. So D is the right answer. Yes, Kartikeya, Adrija, Vanisha, Kushagra, Nandini, all right. D is the right answer. तो आप देख सकते हो these three are the winners and they all were given equal 1/3, 1/3, 1/3 है ना. Suzuma Kitagawa, Richard Robson and Omar M. Yagi. Okay, so that is what you should know है ना. For the development of metal organic frameworks. This is the reason why they have got Nobel Prize in chemistry. Okay, थोड़ा डिटेल जानना चाहोगे? So they have written in their website, the construction they created metal organic frameworks contain large cavities in which molecules can flow in and out. ठीक है, so ऐसा कुछ कैविटी है, बीच में कैविटी टाइप है, ये उनकी फोटो उसमें देखा होता है, इसमें से मॉलिक्यूल्स फ्लो हो सकता है. ओके, सो दैट इज व्हाट दे ट्राई टू एक्सप्लेन. तो बीच बीच में जो कैविटी है ना, so that is what they talked about. Researchers have used them to harvest water from desert air. Okay, extract pollutants from water, capture carbon dioxide and store hydrogen. Okay, तो ये जो बीच में कैविटी है इसका बहुत सारे यूज है. ठीक है, so ये जो बीच बीच में कैविटी, जो हॉलो स्पेस होता है उसको कैविटी कहते हैं. So these are used for these purposes. ये सब लिखा ना कि यूज फॉर them to harvest water from desert air. तो डेजर्ट में मान लो डेजर्ट, इसके ऊपर में एयर होगा ना, तो उससे वाटर निकालने का कुछ टेक्नोलॉजी. एक्सट्रैक्ट पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वाटर, और पानी में मान लो कि कंटामिनेटेड वाटर, तो उसमें गंदगी खींच के निकालने का कुछ सिस्टम होगा थ्रू द हेल्प ऑफ दोस कैविटीज. कार्बन कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टोर हाइड्रोजन. सो दीज आर सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज. एक रफ आइडिया होना चाहिए. ठीक है, दैट इज मोर देन इनफ. तो मैं पिक्चर क्यों दिखाता हूं? बिकॉज से याद रहता है कि अच्छा कैविटी की सर कुछ बात किए थे एटसेट्रा एंड ऑल. ठीक है, that's the only reason I'm showing the picture. Otherwise ये पूरा इसका डिटेल नहीं पढ़ना है. You're not supposed to go in detail. These are images I have taken from the Nobel Prize website only. ठीक है. Now let's talk about the three winners. The first one is Suzumo Kitagawa. He's from which country? Japan, Germany, US, UK. बताइए. Yes, Japan is the right answer to this question. है ना? So थोड़ा you can remember it है ना? So that is what you should know. He was awarded Nobel Prize in chemistry. Metal organic frameworks. Kyoto University है. Kyoto is a very famous city. है ना? Kyoto University काफी famous है जापान में. And he has won previously these awards. ठीक है, जापान Academy Prize, Nobel Prize in chemistry, etc. ठीक है. So बस इतना पता होना चाहिए. That is what you should be knowing about. The next is Richard Robson is from Japan, Germany, US, UK. Second वाले. Three winners Nobel Prize chemistry this year. Richard Robson कहां से बताइए. Yes, the right answer is option D. है ना? So UK is the right answer, not C. ठीक है. So again people are saying option C. ठीक है. So Glasgow, England, UK से born है. ठीक है ना? And he is currently is an English and Australian chemist. अच्छा, born in England है, लेकिन currently he is actually having Australian nationality. Okay, so is from born UK but nationality is of Australian. तो Australian citizen है. University of Melbourne, of course Melbourne Australia में जगह है, वहाँ है ना. So he specialized in coordinated polymers, metal organic frameworks. Again वही वाली बात है ना. So that is what you should be knowing about. तो मेन वही उनका केमिस्ट्री पर उनका रिसर्च है. The next one is Omar M. Yagi is from where? Saudi Arab, Syria, Palestine, France. Actually, origin I am asking. ठीक है. Wikipedia of Nobel Prize shows he is from USA. किन के बारे में? रिचर्ड रॉबसन? नहीं. Son, Nobel Prize. He is from Jordan. Originally from Palestine, but from Jordan है ना. ठीक है. ये जो है ना originally from Palestine है, but now his family got settled in Jordan. So he was born in Amman, but इसलिए मैं बोल रहा था कि मैं origin पूछ रहा हूँ. ठीक है. So अगर आप देखोगे, so that is why it was very much in the news. Amman, Jordan, but originally Palestinian race. अब देखोगे, was born in Amman to a Palestinian refugee family that had fled from Gaza during 1948 Palestinian expulsion and fight. Okay. So that is what you should know. So the right answer is C. ठीक है. So यहाँ पे I'm sure you must be, we have discussed this is Gaza. है ना.
सो ये 1948 का इवेंट है, ठीक है. So I'm sure you must be aware since 1948 के बहुत पहले से ये the Israel-Palestine conflict has been happening. Okay. So the recent one it appears that it started from 7th October 2023, but actually the conflict is much more older than this date. So ये तभी देखोगे आप they have talked about the 1948 and then 67 war, 73 war, many other wars happened. So his family moved from Gaza to Jordan. Amman is the capital of Jordan, right? हाँ. So originally मैंने अगर ये पूछेंगे कि originally कहाँ के, so you should answer Palestine. Otherwise if they ask where he is born, so Jordan, Amman, or citizen of Amman. ठीक है. What is the capital of Palestine? Ramallah. ठीक है. हाँ, फैमिली रूट्स फ्रॉम पैलेस्टीन. तो जिस तरह क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आपको आंसर करना है. सो समवन वाज सेइंग कि सर रिचर्ड रॉबसन का जो है, नहीं, रिचर्ड रॉबसन में यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है नोबेल प्राइज की वेबसाइट में. आई चेक्ड. ठीक है. इसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि सर यूएस लिखा है. नहीं, आई चेक द नोबेल प्राइज वेबसाइट, ऑस्ट्रेलिया, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया लिखा है. नहीं, पैलेस्टीन का कैपिटल रामल्ला माना था. दिस इज द कैपिटल ऑफ पैलेस्टीन. ठीक है. ओके, लेट्स मूव ऑन. कुछ लास्ट ईयर के भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करा दे रहा हूं. लास्ट ईयर नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2024 आई एम आल्सो डिस्कसिंग. ठीक है. द विनर ऑफ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री लास्ट ईयर वाज, व्हाई आई एम डिस्कसिंग लास्ट ईयर आल्सो बिकॉज़ क्लैट जो है वो 1-2 साल पुराना क्वेश्चन भी पूछते हैं. दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट बिकॉज़ आई वांट यू टू नॉट मिस इवन अ सिंगल क्वेश्चन. मैं बस ये चाहता हूं कि आपका एक भी सवाल मिस नहीं हो, तो हम जितना कंप्रिहेंसिव हो सके हम आपका तैयारी करा दें, है ना. So then the answer is David Baker, Demis Hassabis and John M. Jumper. ठीक है. So C is the right answer. तो इनको हाफ मिला था और इन दोनों का हाफ मिला था, ऐसा मिला था. बस समझ आया. तो इनको 25% अवार्ड मिला, इनको 25% और इनको 50%, like this. ठीक है. Last year we are talking about. This is 2024 Nobel Prize in Chemistry. This has to be very crystal clear. Last year we are talking. ठीक है. So David Baker has got Nobel Prize in Chemistry. फॉर वॉट? इनको किस चीज से लिए मिला था? लेफ्ट वाले को डेविड बेकर गॉट फॉर, तो ये सब फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, ये सब प्रोटीन से रिलेटेड ही मिला था. जस्ट रिमेंबर इट, है ना. एंड डेमिस हसाबिस एंड जॉन एम जंपर गॉट द नोबेल प्राइज फॉर व्हाट? अगेन हाँ, इससे पहले का आंसर सी था. एंड अगेन दे गॉट फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन. सो दोनों को प्रोटीन से ही रिलेटेड अवार्ड मिला था. ठीक है ना, ऑल थ्री को. ठीक है. And for protein computational design, इनको मिला था प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए. This guy is very important because पर PYQs आया हुआ है. गूगल डीप माइंड याद है? क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लैट में कि गैरी कैस्परोव ने किसको हराया था, कौन से कंप्यूटर को हराया था. यस, दिस वाज द क्वेश्चन, है ना. तो जो डेमिस हसाबिस है ना, ये डीप माइंड से कनेक्टेड है. मैं आपको दिखाता हूं, इतना डिटेल नहीं जाना है, जो चीज मैं आपको काम को बताता हूँ. और ये हो गया डेमिस हैपेसिस एंड आर फेमसली एसोसिएटेड विद डीप माइंड, है ना. सो दैट इज व्हाट यू शुड. अच्छा, वो डीप ब्लू था क्या? नहीं, लेट मी चेक. बट डीप माइंड वाज इन द न्यूज़ फॉर सम अदर रीजन. बताता हूँ. डीप ब्लू, सॉरी प्लीज करेक्टेड. दिस वाज डीप माइंड वाज इन, ये भी न्यूज में तभी हमको ध्यान से निकल रहा है. गूगल डीप माइंड वाज इन द न्यूज लास्ट ईयर फॉर सम अदर रीजन इट वाज इन द न्यूज. ठीक है. हाँ, डीप माइंड एक कंपनी से इसको गूगल ने लास्ट ईयर एक्वायर किया था. यस. ठीक है. सो दैट इज व्हाई इट वाज इन द न्यूज, है ना. देखो, डीप माइंड इन्हीं कंपनी डेमिस हैपेसिस जो वन ऑफ द विनर ऑफ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री लास्ट ईयर थे. ठीक है. हाँ, वो डीप ब्लू था. ठीक है, करेक्ट. Okay, introduce neural Turing machines etc. Let's move on. थोड़ा सा हम नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री का हिस्ट्री जानेंगे. Let's discuss some of the history. Please read this question and then answer me. Because they are asking questions from history. पुराना उठा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2 साल 3 साल पुराना. So he shared Nobel Prize in Chemistry 2009. राइबोसोम्स, बताओ कुछ याद आ रहा है? The right answer is Venkat Raman Ramakrishnan.
ये मैंने किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन देखा था पूछते हुए, इंडियन ओरिजिन के लोगों से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे ब्रिटिश अमेरिकन इसलिए लिखा है कि ही वाज नॉट लेटर ऑन, आई मीन ही वाज बोर्न इन इंडिया बट ही एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ यूएस एंड ब्रिटेन, तो इसलिए उनको ब्रिटिश अमेरिकन लिखते हैं ऐसे। और इंडियन ओरिजिन के पीपल से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, अगर उनको पूछना होगा तो इंडियन ओरिजिन के से क्वेश्चन पूछेंगे, इफ दे वांट टू आस्क गो इन द पास्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बोर्न इन इंडिया and then acquired UK US citizenship, that's why it is called as British American, है ना। Okay, let's move on to the next one. So we are discussing about Nobel Prize in Chemistry and past important winners, ठीक है। इनका नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ओके, है ना, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं ना, इनका नाम आपने सुना होगा, इज वेरी फेमस पर्सनालिटी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, सुना है ना। If you have read science and technology properly, you must have heard it. Yes, Karthik, very good. So that is what you should be knowing about. ओशेनिया, वही ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से फर्स्ट थे जिनको वहां से अवार्ड मिला था, है ना, फॉर एंड केमिस्ट्री ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस फॉर रिसर्च। हाँ, गोल्ड शीट एक्सपेरिमेंट एटसेट्रा, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट वन, स्टार मार्केट। If they want to ask from past, these are the questions that can be asked. इतना सारा कीवर्ड बता दे रहा हूं। फर्स्ट मैरिड कपल भी थे जिनको अवार्ड मिला था, शी हैज गॉट 2 अवार्ड्स, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एज वेल। हाँ, मैरी क्यूरी, वेरी गुड, फैंटास्टिक। हाँ, इनके हस्बैंड थे ना के साथ। सो बेसिकली हस्बैंड का नाम है पेरी क्यूरी एंड मैरी क्यूरी वाज द लेडी, है ना। सो ऑफ कोर्स रेडियो एक्टिविटी पे इन लोग का रिसर्च था, है ना। सो दे हैड गॉट नोबेल प्राइज, वन इन फिजिक्स अनदर इन केमिस्ट्री, ठीक है। सो ये ऑफ कोर्स बहुत बड़ी बात है। 1903 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, 1911 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वंस एंड आई होप यू ऑल शुड बी नोइंग इट, है ना। 1903 फॉर रिसर्च ऑन रेडिएशन फेनोमेना, है ना, 1911 पे फिर मिला था, है ना। रदरफोर्ड का हो गया। हाँ, रेडियो एक्टिविटी वगैरह सब बात हो रही है, लेकिन जो फाउंडर ऑफ रेडियो एक्टिविटी हेनरी बैकरल को कहते हैं, याद रखिएगा। दे ऑल हैव डन रिसर्च, जितना भी है, जैसे मैडम क्यूरी हो गया या अर्नेस्ट रदरफोर्ड, दे ऑल हैव डन रिसर्च ऑन रेडियो एक्टिविटी, बट फाउंडर ऑफ रेडियो एक्टिविटी या फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो है हेनरी बैकरल को कहते हैं। हाँ, ये बता सकते हो। सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आई एम आस्किंग, देन वी विल मूव टुवर्ड्स लिटरेचर एंड पीस आल्सो, दोनों डिस्कस करेंगे। Name the 2 person who won Nobel Prize in Chemistry twice. दो बार जीतने वाले में से, so the right answer is Frederick Sanger and K. Barry Sharpless, है ना, इन लोगों को 2 बार मिला अवार्ड, so the right answer yes. Nobel Prize in Chemistry twice, देखो मैरी क्यूरी को एक बार फिजिक्स में मिला और एक बार केमिस्ट्री में मिला है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, सो इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये फ्रेडरिक सैंगर और बैरी शार्पलेस, इनको 2001 और 2022 2 बार मिला, है ना। सो अदर पीपल हु हैव वन 2 नोबेल प्राइज, आई एम नॉट सेइंग 2 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, टोटल 2 अवार्ड, तो इनको फिजिक्स में मिला और केमिस्ट्री मिला, एंड इनको केमिस्ट्री में मिला, पीस प्राइज मिला 62 में लिनस पॉलिंग को, जॉन बर्दीन फिजिक्स में ट्वाइस मिला 56 72। यही सब क्वेश्चन उठा के पूछेंगे। If they'll give a passage on Nobel Prizes, they will ask from here. पुराने उठा के क्वेश्चन पूछते हैं, I've seen it. That's why I'm saying they ask old questions. Nobel Prize in Literature 2025. Nobel Prize in Literature is given by, I've told you many times. So basically the answer is B, Sweden. ठीक है, Norway gives peace prize only, है ना. So B is the right answer. है ना, Sweden we have done. And the institute which gives Nobel Prize in now we are not in chemistry, we are in literature. The institute which gives Nobel Prize in literature is ये वाला Swedish Academy, ठीक है. So C is the right answer to this question, ठीक है.
स्वीडिश एकेडमी, है ना. सो दीज आर द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डन इट, सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट. आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा इफ यू आर इंटरेस्टेड. ये स्वीडिश एकेडमी, ये स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज नहीं है, सिर्फ स्वीडिश एकेडमी, है ना. स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग यही है, इन्हीं की बिल्डिंग में, स्टॉक होम का. ओके, यस, नोबेल प्राइज लॉरिएट्स. नाउ विनर का नाम बताना है 2025, प्लीज टेल मी. एंड इज फ्रॉम विच कंट्री, ये भी बता दीजिए. Yes, name is quite difficult. I don't know the pronunciation, but this is the answer. From which country? Hungary. Yes. So B is the right answer to this question. And this person is from Hungary. ठीक है. So let me show in the map. तो पहले हम लोग जान लेते हैं कहाँ पे winner. So this is the winner, Laszlo Krasznahorkai. I don't know the pronunciation. Hungary. For his compelling and visionary over that in the minds of the apocalyptic terror reaffirms the power of art. बहुत डिफिकल्ट है, याद कर, बस जस्ट देख लीजिएगा ना. सो ये रीजन नहीं पूछते हैं जनरली, ये पूछेंगे नाम एंड फ्रॉम विच कंट्री. हंगरी. हाँ, बिसाइड्स ऑस्ट्रिया, राइट. सो हियर इज इंडिया, दिस इज ऑस्ट्रिया, दिस इज हंगरी. आपने वर्ल्ड वॉर 1 की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर, वेरी फेमस, है ना. ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर, तो वही उसी का हिस्सा बचा है. If you have read World War, I'm sure you must be aware of it. ठीक है. So you can read about him, है ना. थोड़ा सा इनके बारे में कुछ चीज जान लेते हैं. मैन बुकर प्राइज भी इनको 2015 में मिला था. ठीक है. नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025 से मिला. ठीक है. ओके. So ये यूनिवर्सिटी का नाम है where he is associated with. So very difficult name to remember. अब 2024 का नोबेल प्राइज थोड़ा सा जान लेते हैं. लास्ट ईयर का who was the winner last year? Last year Nobel Prize winner literature, Hang Kang from South Korea, है ना. Hang Kang from South Korea, याद रखिएगा. So B is the right answer to this question, है ना. And she had got it for what purpose? So ये reason था, for her intense poetic prose that confronts historical traumas, expose the fragility of human life. बस इतना डिटेल नहीं पूछेंगे, नाम पूछ सकते हैं कि लास्ट ईयर के विनर का नाम. समटाइम्स दे आर आस्किंग ओल्ड वंस, इसीलिए मैं बता दे रहा हूं. ठीक है ना. ओके, एंड शी गॉट द मैन बुकर प्राइज आल्सो इन 2016. तो बस इससे ज्यादा नहीं जानना है, दैट इज मोर देन इनफ, है ना. हिस्ट्री ऑफ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, हाँ यहाँ थोड़ा सा जान लेते हैं. हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है. वी हैव सीन इन क्लैट दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट. सो चलो ये बताओ. द राइट आंसर इज विलियम बटलर यीस्ट. ठीक है, इनका नाम आपने सुना होगा. कुछ इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटीज का नाम बता, आयरलैंड से थे. आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड हिज नेम, कभी न कभी अपने स्कूल डेज में सुना होगा. वेरी गुड कार्तिक, फैंटास्टिक. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग टू आंसर लाइक समवन, बट यस आई हैव गॉट द आंसर. फैंटास्टिक, है ना. नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. नेक्स्ट वन, ये बताइए. ये बहुत फेमस है ये वाला, इनकी बुक. इवन आई हैव रेड आल्सो in my college days, Pygmalion. (1925) Nobel Prize Literature, है ना. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड हिज नेम. इनका नाम जरूर सुना होगा आपने, नाम तो जरूर सुना होगा. पढ़ा होगा, किताब नहीं पढ़ा होगा, इट्स अ डिफरेंट मैटर, बट you must have heard his name. Yes, Kushagra, very good. Karthik, very good, fantastic, है ना. Let's move on to the next one. बर्ट्रांड रसल, इनका भी नाम सुना होगा, आई एम श्योर. ठीक है, थोड़ा सा मैं पास्ट डिस्कस करा दे रहा हूं बिकॉज दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट एंड दैट इज व्हाई आई कैन नॉट हेल्प यू. मतलब
थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जा रहा है, लेकिन क्या किया जाए। अब वैसे अगर आप पीवाईक्यूज उठा के देखोगे, वैसे पूछा उन्होंने 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, ऐसे दे हैव डन इट, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट फॉर यू आल्सो। ये तो आप ऐसे ही कर लोगे आंसर इसी से देख के। बताओ, हु वाज द यूके प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर? वेरी फेमस नेम। नहीं कार्तिक, क्या देखो, ऐसे गारंटीड कोई चीज की नहीं ले सकते, बट स्टिल आई हैव ट्राइड टू कवर होलिस्टिकली, तो इतना कर लोगे होपफुली इसमें से आ जाए। यस, वेस्टर्न चर्चिल, वेरी गुड। कुशाग्रा, कार्तिक, कृषि सचदेवा, प्रियंशी, हाँ, वेस्टर्न चर्चिल, वेरी फेमस मैन, ठीक है। सो ही आल्सो गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ठीक है, 1953। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये भी मैंने पढ़ा है, रिमेंबर ओल्ड मैन एंड द सी इन द कॉलेजेस, आई थिंक, है ना। इनको पुलिट्जर मिला था इसके लिए, और नोबेल प्राइज लिटरेचर मिला था 54 में। एनीवन? क्वाइट इंटरेस्टिंग टू रीड दीस थिंग्स, है ना। लिटरेचर पर पास्ट वाले अवार्ड्स भी याद होने चाहिए। वेरी गुड, फैंटास्टिक कार्तिक। अर्नेस्ट हेमिंगवे, यस, कुशाग्रा, राइट। ओल्ड मैन एंड द सी, बहुत फेमस इनकी किताब है ना। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। यस, क्लैट एस्पिरेंट, यू आर राइट। फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। अभी हम लोग लिटरेचर में, देन वी विल मूव टुवर्ड्स पीस। बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913, है ना। 13 या 14 है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, 1913। यस, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो ये है, हम लोगों ने अर्लियर क्लासेस में इनके बारे में डिस्कस किया, फर्स्ट नॉन यूरोपियन, है ना। यस, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। बार्ड ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ये सब उनका फेमस नेम से। गीतांजलि, है ना। देखिए ये कोई आंसर कर सकता है कि नहीं, एंड इट वाज इन द न्यूज लास्ट ईयर आल्सो एंड दिस ईयर आल्सो। फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, एंड आई थिंक इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। He is actually the one who has written 2 national anthems. One is Jana Gana Mana and Bangladesh Dash. Amar Sonar Bangla. Yes, he wrote during partition of Bengal, जब हो रहा था ना ब्रिटिश के टाइम पर, partition of Bengal 1905. So British were partitioning it, East Bengal and West Bengal, to divide it. They were that was the part of divide and rule policy. Okay, so that is what you should be doing. Amar Sonar Bangla में My Golden Bengal, है ना। इवन श्रीलंका का जो नेशनल एंथम है, उसको भी कहा जाता है कि इज इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज राइटिंग्स, ठीक है। सो ये भी आप देख लीजिएगा थोड़ा सा ना, बट दो तो इंडिया और बांग्लादेश को तो माना ही जाता था, है ना। लेट्स मूव ऑन फर्दर। ये हम लोगों ने अर्लियर भी डिस्कस किया है। इन द ईयर वाई, ईयर ही बताना। रुडयार्ड किपलिंग, इन विच ईयर ही गॉट, वाई भी बताना है। तो इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन। सिर्फ वन लाइन में प्रिपेयर कर लेगा, अच्छा नोबेल प्राइज लिटरेचर इनको मिला और ये रीजन से, चलो आगे बढ़ेंगे। बट क्लैट वाले ऐसा नहीं पूछते हैं, वो डिटेल में जाते हैं। सो योर प्रिपरेशन हैज टू बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, नॉट वन लाइनर। और वो बहुत कम ही लोग कर पाएंगे, ऑफ कोर्स, एंड दोज आर एक्चुअली द विनर्स, ठीक है। सो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था 1907 में, ठीक है। ये भी आप कर लोगे आंसर, मैंने बताया है, प्लीज। इन द फर्स्ट लाइन द आंसर इज हिडन, मैंने बताया है। I have told you, Brian Lara, very famous cricketer, is also from the same place. He's an Indian origin person born in Trinidad and Tobago, later on got British citizenship. हाँ, रुडयार्ड किपलिंग born in India थे। Yes, इससे पहले वाला करना। हाँ, ये बताइएगा, बहुत फेमस आदमी, VS नैपाल, वेरी गुड वनीशा। हाँ, तो ऐसे पहचानना है, पकड़ना है, ठीक है। सो यू शुड रिमेंबर इट, एंड these are famous personalities, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा किसी एग्जाम में, कई सब क्वेश्चंस आते हैं इन सब पे बेस्ड, तो आप आराम से कर लोगे।
So he got Nobel Prize in the year literature in 2001. ठीक है, ये पूछना है कि कौन से ईयर में मिला. So 2001 में. That's it. है ना, आप देख सकते हो. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अल्मा मैटर है, नहीं पास आउट है वहां से. हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेस्ट इंडीज आइलैंड है ना, ये इंडिया. तो ये वेस्ट इंडीज आइलैंड है ना, इसी में मिलेगा ट्रिनिडाड एंड टोबैगो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नोबेल पीस प्राइज 2025. तो हम लोग इस पे चलते हैं. इस साल का विनर गिवन बाय, अगेन वी हैव टोल्ड यू, इस केस में नॉर्वे होता है, ये आपको याद होना चाहिए. आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर. स्टार मार्केट, दिस वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स दैट नॉर्वे गिव्स पीस प्राइज, व्हाट वी कॉल इट एज नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी. द अदर 5 इज गिवन बाय स्वीडन. एकदम रट लेना चाहिए अब तक, ठीक है. ये सब हो गया इंस्टीट्यूट व्हिच गिव्स नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी. अब तक ये सब रटा हुआ होना चाहिए, है ना. ओके, सो प्लीज टेल मी विनर. अच्छा, इन टुडेज क्लास आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, नहीं मौका मिलेगा तो नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प, व्हाई डोनाल्ड ट्रम्प डिड नॉट गेट द अवार्ड. ठीक है, इसको हम लोग नहीं तो कल क्लास में कर लेंगे. हाँ, मारिया कोरिना मैचाडो, शी इज फ्रॉम व्हिच कंट्री, व्हाट इज द आंसर? सो सी इज द राइट आंसर. शी इज अ Venezuela's opposition leader. B is the right answer to this question. ठीक है ना. For her tireless work promoting democratic rights of the people of Venezuela, for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. Who is the ruler, current ruler of Venezuela? Nicolas Maduro. Very good. हाँ, Nicolas Maduro. Earlier there was Hugo Chavez. Now there is Nicolas Maduro. So basically these two have problems with USA. USA से conflict चलता है, आपको पता होगा शायद. And that is why the opposition leader is having good relation with US, Donald Trump, etc. And she said कि I'm dedicating my prize to Donald Trump, etc. ठीक है. So यहाँ पर वेनेजुला है. वेनेजुला की कैपिटल बताइए. And it is famous for the reserve of what? क्या चीज के रिजर्व के लिए बहुत फेमस है ये जगह? कैराकस. पेट्रोलियम रिजर्व हाईएस्ट. वेरी गुड, वेरी गुड. यस, क्लैट ट्रांसपेरेंट कृषि सचदेवा. यस प्रियांशी, यू आर राइट, है ना. ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा इनके बारे में थोड़ा सा, है ना. और मैंने क्लास लिया था, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? यहाँ पे मैंने वेनेजुला क्राइसिस बताई थी. इवन हाइती और अर्जेंटीना वाज इन द न्यूज़. सो आई हैव डिस्कस्ड इट. नाउ आई थिंक दिस टॉपिक बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट. तो आपको वेनेजुला के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज हैपनिंग, है ना, एंड व्हाई देयर इज अ क्राइसिस एटसेट्रा, है ना. सो ऑफ कोर्स नाउ वेनेजुला बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट. सो गो एंड वॉच दिस वीडियो स्पेशली अबाउट वेनेजुला सेक्शन, है ना. ऑपोजिशन लीडर मैचाडो विंस नोबेल पीस प्राइज, डेडिकेट्स टू ट्रम्प. ठीक है. सो जो लीडर है ना वेनेजुला के भी करेंटली, उनका जो है यूएस से बनता नहीं है. ठीक है. सो हुगो चावेज एंड अदर पीपल, निकोलस मदुरो, दे आर नॉट एक्चुअली हैविंग गुड रिलेशन विद यूएसए, राइट, है ना. नाउ थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वगैरह भी हो गई थी. सो इट वाज आल्सो इन द न्यूज़. Why? Because she is considered as right-wing U.S. interest. She supports the right-wing U.S. interest, that is of Republican Party. The ideology is similar, no, of Donald Trump. Then others have contended she supports international sanction on Venezuela government, which is contradictory to peace. तो उनको इसलिए भी क्रिटिसाइज किया गया कि वो सपोर्ट करती है, हाँ सैंक्शन बायकॉट होना चाहिए इकोनॉमिक वेनेजुएला गवर्नमेंट का. So those who have criticized, they have said it is against peace. And then there are incidents where she has supported Likud Party of Israel. Likud Party is Benjamin Netanyahu ki party, the Prime Minister of Israel. So that is also, these were the things that were coming in the news. Okay. नोबेल पीस प्राइज 2024 डिस्कस करते हैं. उसके जो पास्ट वाले विनर्स हैं और जो कंट्रोवर्सी के डोनाल्ड ट्रम्प को क्यों नहीं मिला एंड ओबामा गॉट इट एटसेट्रा, विल डिस्कस इन द टुमारोज क्लास. कल के क्लास में विल डिस्कस नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स आल्सो, जो कि टुडे इट विल बी अनाउंस्ड, सो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट दैट. 2024 के विनर का नाम बताइए. यस, निहोन हितांशु. क्या है ये? D is the right answer. This is what is translated in English as what?
Yes, Japan's nuclear disarmament organization, they were against nuclear weapon making because of नहीं ये sorry B, Japan Confederation ANH bombers. Translation पूछ रहे हैं, so this is the answer. B is the right answer. ठीक है, so this is the exact answer कि वो लोग जो है एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब, हाँ ना, ये सब बॉम्ब के अगेंस्ट है. ए से एटम बॉम्ब, एच से हाइड्रोजन बॉम्ब. So basically they say कि of course I'm sure you must be aware that Japan has been the victim of or was the victim of 6 August 1945, 9th August 1945. So Hiroshima and Nagasaki were bombed. Yes, the those who have survived, they are called as Hibakusha. Very good, Karthik. हाँ, काम तो D है. Yes, you are right. Their work is this, but translation जो है ना वो option B है. ठीक है. Yes, you are right. See, 1956 में लोगों ने बनाया आपको. देखो तो कॉमन सेंस से बताओ. It was dropped in 1945. हाँ, तो ये तीनों उसके बाद ही है. हाँ, so the right answer is C. ठीक है. So Hibakusha means those who are the survivor of atom bomb. उन लोगों ने बनाया था, है ना. मेन वही मकसद था कि abolition of nuclear weapons etc. That was the main goal, है ना. So this is what you should be knowing. तो उनके वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो वैसे, है ना. तो इनको क्यों मिला? So they won it for this, for its effort to achieve a world free of nuclear weapons and for demonstrating through witness testimony nuclear weapon must never be used again. So this was the thing. ठीक है. So we are stopping this class here. और हम लोग next tomorrow's class we will discuss Nobel Prize in Economics winner. ठीक है. Nobel Prize in Economics 2025 winner, and we will discuss about those controversy की Donald Trump को why he could not get this year etc. थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे बिकॉज वो भी कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा न्यूज में था, तो थोड़ा सा मैं बता दूंगा उसको भी. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास. थैंक यू एवरीवन. थैंक्स फॉर वाचिंग. हैव अ नाइस डे.